Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yat videos maz samjhavo is kith pati heko is kunti eventage probability kadith mukhtalif situation pet yim khatir clear karne khatir nimo is ki example yimo maz godich example is nimo the percentage of marks obtained by a student in the monthly unit tests are given below. Unit test: first, second, third, fourth, and fifth. Percentage of marks obtained: 69, 71, 73, 68, 74. Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. In ashak data dith, yath manz ak student test divan chi, unit test divan chi, monthly unit test divan chi. Yaman manz marks ana chi, kim percentage marks ana chi. This data is dith. Yani godikis unit tests manz 69% marks ana, doimis unit tests manz 71% marks ana, treimis unit tests manz 73% marks ana, tzurimis unit tests manz 68% marks ana, panchmis monthly unit tests manz 74% marks ana. This data मद्दे नजर थयित हको अस कड़ित probability कि इतसी नयिस अकिस यूनिट टेस्टस मज कत्या चांसेस कच परसेंट चांसेस तस मोर देन 70% मार्क्स आनस यानी अगर नो युथी कह टेस्ट दीस तस कत परसेंट चांसेस कि सह हेकि मोर देन 70% मार्क्स अनित यथ प्रॉब्लम मज वनान द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट्स हेल्ड यानी इस फिर वो कच यूनिट टेस्ट गए सलम यमन हुन डेटा अस दिथ तम 1 2 3 4 and 5 यानी 5 unit test and the number of unit tests in which the student obtained more than 70% marks यानी कच unit test तम यमन मज एम स्टूडेंटन 70% खोत ज्यादा मार्क्स यानी ज्यादा मार्क्स 70% खोत ज्यादा यूनिट टेस्ट थर्डस मज यूनिट टेस्ट सेकंडस मज यूनिट टेस्ट सेकंडस मज 71%, यूनिट टेस्ट थर्डस मज 73%, यूनिट टेस्ट फिफ्थस मज 74% यानी यम 70% खोत ज्यादा अम त्रेन टेस्टन मज यानी त्रे टेस्ट बनाए फेवरेबल आउटकम्स. So, probability of scoring more than 70% marks. So, go formula use probability kadne khatir probability of an event kadne khatir number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Number of favorable outcomes gay as 3 yaman mazim 70% khota zyada marks in total number of outcomes yani kaita tam test yim total test deny tam 5 so go 3 divided by 5 is फिर fraction करो so go 0.6 यानी तमिक मतलब गो 60% chances हसे
यिनہٕ वٲلِس یُس نوٚو یُتھُے ٹیسٹ آسہِ تَتھ منٛز ٲسۍ أمِس 60% چانسز کہِ یہِ ہیٚکہِ تَتھ ٹیسٹس منٛز مور دین 70% مارکس أنِتھ. یعنی ییٚمہِ پروبیبلٹی سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ چیٖز پتہ لگان کہِ اگر یُتھُے ییٚمہِ پٔتمہِ ڈیٹا حساب اگر نوٚو اکھ ٹیسٹ گژھِ تَتھ منٛز ہسا ہیٚکہِ یہِ تَتھ منٛز ہسا چھِ أمِس 60% چانسز کہِ یہِ ہیٚکہِ مور دین 70% مارکس أنِتھ. بیاکھ اکھ پرابلم وٕچھو أسۍ. The record of a weather station shows that out of the past 250 days, 50 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. What is the probability that a given day it was correct? Number 2, what is the probability that it was not correct on a given day? यानी एक वेदर स्टेशन छ रिकॉर्ड कोर्मुत वेदर लगातार 250 days 250 दोन तथ मज छ तसुंद वेदर प्रिडिक्शन नेरान करेक्ट 175 times. As wana til winu sati what is the probability that on a given day it was correct? Agar weather forecasting prediction kari weather's mutliq yin wailis इथिस दोहस मज कि सह कच परसेंट आस करेक्ट तो बे कच परसेंट यानी क्या आसन तथ चांसेस कि वेदर प्रेडिक्शन आस न करेक्ट कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने खातिर इस प्रॉब्लम करो इस पे सॉल्व इस वनो the total number of days for which the record is available so go equal to 250 days यानी कता तमन दो यमन हुंद रिकॉर्ड अवेलेबल तमस 250 days तेल गई total number of outcomes 250 total number of outcomes गई तेल 250 अस वना तेल probability the forecast was correct on a given day यानी इस कड़ो probability युस forecast वोन तम दो सह कोता आसि correct so go formula number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Number of favorable outcomes छ ऐसी कि युस पतमस रिकॉर्ड्स मज वुचान कि कतहन दोहन prediction correct dramus सह 175 times. Go number of favorable outcomes छ 175. Total number of outcomes छ 250. So go 175 divided by 250. ये fraction करो इस 5 से 5 3 is 15 5 5 25 याद करो 5 5 is 25 5 0 5 be 5 से 5 7 is 35 5 1 is 5 5 0 0 यानी ये बना हुआ है 7 upon 10 and 7 upon 10 one is 0.7 0.7 यानी 70% chances हसे छ prediction correct आसनस वन वैसे कत्या परसेंट chances छ युस prediction इस करो वेदरिच सनस आसन correct की so probability the forecast was not correct on a given day. So 1 im khatr formula 1 minus probability the forecast was correct. Kya total probability chasi 1 im mas karo is minus so probability use s1 forecast as correct.
So 1 minus 0.7. 0.7 is equal to is minus करो so go 0.3. But तमिक मतलब गो 30% chances हसे छ prediction गलत आसनस. बेक example निमो इस. In a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls he plays. Find the probability that he did not hit a boundary. The problem is in a cricket match, a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls. In a batsman's 30 balls rata, through ball rata, yatmas boundary chlayan shayfir. Find the probability that he did not hit a boundary. Tell me the probability kaita percent chances sh कि सह हेकिन इन वाली बाल हिट बाउंड्री लगायत के ये प्रॉब्लम करूँ इस पर सॉल्व. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स a batsman plays. यानी कत्स ऑफ बॉल च बैट्समैन रटा तम टोटल बॉल्स थ्रू बॉल तेल बने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स गए 30. Number of times hits a boundary. यानी कच लाइटे छस boundary लाया 6 times. ये बनावा है favorable outcome. But therefore, probability the batsman hits a boundary. यानी क्या probability ये लसे batsman boundary लाया है. को number of favorable outcome use formula divide by total number of outcome. Number of favorable outcome यानी 6 times here hit लाया 30 ball मस go 6 divided by 30 यानी 6 upon 30 के total number of outcomes is 30. इस फिर इस याद वचो याद करो इस fraction 6 1 6 6 5 30 ये go 1 divided by 5 इस फिर इस decimal मस convert करो ये go 0.52 10 go 0.2. को तमिक मतलब 20% chances हसे छ एमिस कि यह हेक बाले हिट लयत बाउंड्री पे. Probability the batsman does not hit a boundary. यानी कतच probability कि बैट्समैन हेक न हिट लयत बाउंड्री हिट लयत बाले बाउंड्री पे कहीं. So go formula im khatir 1 minus probability the batsman hits a ball on boundary. So go 1 minus 1 divided by 5 because 1 divided by 5 chesi probability that the batsman hits a boundary. So go cross multiply kirit 5 1 is 5 minus 1 divided by 5 upon 5. 5 minus 1 go 4. 4 divided by 5. इस फिर इसे fraction करो. 5 1 is 5. ये go point. 5 8 is 40. Go 0.8 change probability. यानी तमिक मतलब go 80% chances हसे चेमिस तम कि यह कि न boundary layer बाले